Good morning, smart learners of EVS. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. And I always pray to God for your safety. तो चलो आज की स्टडीज भी स्टार्ट करने से पहले लेट्स प्रे टू गॉड. So fold your hands and close your eyes. Students, today we will continue our lesson number 4, that is food and digestion. In this chapter, we have studied about balanced diet, digestion, food of plants, food of animals and food chain and food web. आज हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और बच्चों इसकी एक्सरसाइज पार्ट समझेंगे एंड एनिमेशन पार्ट देखेंगे और लास्टली व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज वैल्यूज एंड लाइफ स्किल समझेंगे. सो गेट रेडी. Open your page number 24. We will start from remember part. Breaking down of food into simple form is called digestion. जब simple form में convert हो जाता है food, break down हो जाता है, उस process को हम digestion कहते हैं. Digestion starts from mouth and ends in the small intestine. और digestion कहाँ कौन से organ से start होता है? Yes, mouth से start होता है और complete यानी end कहाँ पर होता है इस process का? Small intestine में. Glucose is a form of sugar and is readily absorbed into blood. Glucose एक type का बिटा sugar है और वो easily absorb हो जाता है blood में, घुल जाता है easily blood में. The process by which green plants make their own food is called photosynthesis. ऐसा process जिसमें green plants अपना खाना खुद बनाते हैं उस process को हम photosynthesis कहते हैं. Non-green plants get food from dead and decaying plants. जो बच्चे non-green plants होते हैं वो कहाँ से लेते हैं अपना खाना? वो मरे हुए और सड़े हुए पौधों से अपना खाना लेते हैं. Animals are grouped into herbivores, carnivores and omnivores. Animals की 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी. Herbivores जो हरी घास खाते हैं, plant products खाते हैं. Carnivores जो शिकार करके एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और ओमनिवोर्स जो प्लांट ईटर्स भी होते हैं और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं. द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिजल्ट्स इन अ फूड चेन. एक बच्चे सीरीज़ बनी हुई है, एक चेन है हमारे इन्वायरमेंट में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो उस सीक्वेंस को, उस चेन को हम फूड चेन कहते हैं.
द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब। और जब बहुत सारी चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में लिंक बन जाता है उनका, तो वो एक नेटवर्क बनाती हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं। Food and digestion. We have learned that our body is like a machine and our body needs energy to do work. Food gives us energy to work and play. It helps us to grow and makes us strong and healthy. But how does food give energy to our body to work and enable it to grow? The food contains various components called nutrients like carbohydrates, fats, vitamins, proteins and minerals. A diet that contains proper amount of all nutrients, roughage and water is called a balanced diet. It is required for good health and proper growth. Ma'am, I always wonder while eating food, what happens to the food we eat? Can you tell me? Good question, Rohan. The food that we eat cannot be directly absorbed by blood. All the food has to be digested. What is digestion? Digestion is a process in which the food we eat is broken into simple, soluble substances which our body is able to use. The journey of food on its way of digestion goes through various stages. Mouth. We eat food through our mouth. Our mouth has two major parts which enable us to break the food into smaller particles. These are teeth and tongue. When we take food, our sharp biting teeth in front cut it. Our flat grinding teeth at the back grind the food. The tongue helps to move the food around in the mouth and also helps to swallow the food. The tongue contains the taste buds on its surface. A digested juice, saliva, mixes with the food. It changes the starch into sugar. Hence, the food tastes sweet. From the mouth, the food goes into the stomach through the food pipe. Stomach. Our stomach is like a bag made of muscles. Several digestive juices produced by the walls of the stomach mix the food and digest it. The stomach takes about 2 to 3 hours to digest the food. Intestine. From the stomach, the food goes to the long coiled tube called small intestine. More digestive juices from the liver and pancreas are added here. The juices mix with the food and the process of digestion is completed. Ma'am, you are right. Our body is like a machine. I cannot imagine that food goes from various stages. You are right, Rohan. But ma'am, what happens to undigested food? The undigested food, which is not absorbed, goes into the large intestine. Large intestine is much wider than the small intestine. It absorbs water from the food wastes and carries it to the kidneys. The solid waste materials are excreted out as feces through the anus. Ma'am, yesterday my friend Rohit was admitted to a hospital. Why? What happened? He was suffering from diarrhea. When I went to the hospital, I saw he was lying on the bed and given glucose drip. Why was Rohit being given glucose? Glucose is a form of sugar being given to Rohit to provide energy in ready-made form. Glucose gets readily absorbed by blood. Glucose is a source of energy for our body. You must have noticed during cricket or any other sports events, players are given glucose water to give instant energy. Does our food contain glucose? Our food contains starch. Let's find out this fact by a simple activity. Take a piece of bread and put it into your mouth. Chew it for a few minutes. What do you find? At first, the bread has a little taste, but after some chewing, it tastes sweet. Yes, it is because saliva inside your mouth contains an enzyme. It changes starch into glucose, makes the food taste sweet. For
good health and proper growth, it is important to have a balanced diet. Food of plants. We have learned that food is essential for survival of all living things. We get our food from plants and animals. Like us, plants also need food. How do they get food? Why do plants have green leaves? The leaves are green in color due to the presence of a green coloring substance called chlorophyll. The green leaf of a plant carries out the important work of making food. For this, a plant gets water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. The chlorophyll pigments trap energy from the sun to make food. This energy is utilized by the chlorophyll to make sugar from water and carbon dioxide. This sugar is later changed into glucose and stored in different parts of the plant. This process of making food is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. Carbon dioxide plus water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen. Now, do all plants make their own food? No, some plants cannot make their food. Then how do they live? Non-green plants like moles, mushroom and fungi do not have chlorophyll to manufacture their food. They are called saprophytes. They get their food from dead or decaying plants and animals. Do you know that some plants grow in soil which is poor in minerals and nutrients? To get minerals, they eat insects. Such plants are called insectivorous plants. Pitcher plant, Venus flytrap, sundew plant and utricularia are insectivorous plants. Pitcher plant. The leaves in this plant are modified to form a pitcher-like structure. When an insect sits on the pitcher of a plant, the lid is closed and insect slips and gets trapped. Inside the pitcher, digestive juices are secreted from the plants which help to digest the insect. Venus flytrap. The leaves of this plant are modified into two lobes that are joined at the center. Venus flytrap catches and digests animals like insects and spiders. The lobes exhibit rapid plant movement, snapping shut when stimulated by prey. It takes about 10 days to digest prey and then the trap reopens and is ready for reuse. Food of animals. What do animals eat? Animals cannot make their own food. They feed on plants and other animals for energy. Animals like cow, deer, rabbit, goat, elephant, which eat grass, leaves, fruits, grains, or the bark of the trees, are called herbivores, plant eaters. Animals like lion, tiger, frog, leopard, etc. eat the flesh of other animals. These are called carnivores, animal eaters. Man, bear, and crow eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Some animals live in or on the living organisms and derive their food from their host. They are called parasites. Mosquito, tapeworm, roundworm. Animals such as bacteria and fungi derive their food by decomposing, breaking down into simpler substances the dead and decaying organisms present in the soil. Such animals are called decomposers. Food chain. Living beings are dependent on each other for their survival. The sequence of eating and being eaten results in a chain called food chain. Food prepared by green plants is eaten by animals. Aquatic food chain. In aquatic food chain, weeds in water are eaten by the small fishes and these are eaten by a big fish. Terrestrial food chain. The grass on land is eaten by a deer. A deer in turn is eaten by a tiger.
eat more than one kind of food. Therefore, different kinds of food chains exist in nature. Food chains do not operate in isolation. The network of interconnected food chains is called a food web. Now exercise part. It is on page number 24. टिक द करेक्ट आंसर. आपने सही ऑप्शन पर टिक करना है. डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है? माउथ, स्टमक या एनस. सेकेंड, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन्स, ग्लूकोज या फैट्स. आपको एकदम से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी किन चीजों से मिलती है? प्रोटीन से मिलती है या ग्लूकोज से या फैट से. थर्ड, फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक, हार्ट, ब्लड. फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, हार्ट में या ब्लड में. फोर्थ, द एनिमल्स which eat both plants and flesh of other animals are called. जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या फिर हर्बिवोर्स. नाउ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फूड कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अगर ये सही है स्टेटमेंट देन यू विल राइट ट्रू, और अगर गलत है स्टेटमेंट तो यू विल राइट फॉल्स. Animals which eat grass, leaves, fruits and grains are called carnivores. जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फल खाते हैं या अनाज खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. थर्ड, मैन, बेयर, क्रो eat both plants and flesh are called omnivores. जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है या भालू है, बेयर है, क्रो यानी कौवा है, ये दोनों चीजें खाते हैं. प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी, और फ्लैश भी खाते हैं. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ओमनिवोर्स. फूड डज नॉट हेल्प टू ग्रो एंड लिव हेल्दी. जो फूड हम खाते हैं वो हमें हेल्प नहीं करता ग्रो करने में, बढ़ने में और हेल्दी रहने में. फिफ्थ पॉइंट, बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स. बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोजर्स कहलाते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू. जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है. सेकेंड, डैश इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. कौन सी चीज है जो ब्रेक डाउन कर देती है फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में. थर्ड, फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस इन द. फूड जब हम चबाते हैं तो मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस में, और कहाँ होता है ये? इन द, आपने ऑर्गन लिखना है. डैश इज अ फॉर्म ऑफ शुगर. क्या चीज होती है जो शुगर की ही फॉर्म होती है, शुगर का ही एक टाइप होती है. फिफ्थ, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ. एक चेन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ईट करता है. सीक्वेंस को, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? सेकेंड, व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द स्टमक. स्टमक में क्या होता है फूड के साथ, क्या प्रोसेस चलता है, वो एक्सप्लेन करना है इसमें. थर्ड, हाउ डज सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे मदद करता है. फोर्थ, व्हाई डज आवर बॉडी नीड ग्लूकोज. हमारी बॉडी को ग्लूकोज की क्यों जरूरत होती है. फिफ्थ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में बताना है. एंड लास्ट इज व्हाट इज फूड वेब. फूड वेब को आपने डिफाइन करना है. एंड नाउ थिंक एंड आंसर. व्हाट वुड हैपन इफ टाइगर्स बिकम एक्सटिंक्ट. क्या होगा अगर टाइगर्स खत्म हो जाएंगे हमारी धरती से. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. इट इज ऑन पेज नंबर 25. सम फूड्स हेल्प us to grow
Some foods give us energy and some foods keep us healthy. Draw a picture of different kinds of foods. कुछ फूड्स बेटा हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, कुछ फूड्स हमें एनर्जी यानी ताकत देते हैं और कुछ फूड्स हमें हेल्दी रखते हैं. आपने उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में. ओके और मैंने यहाँ एक पिक भी दे रखी है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की. ओके तो आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं. कुछ नेम मेंशन किए हैं: कैरेट्स, एप्पल्स, ब्रोकली, ग्रेप्स, पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज. Collect pictures of animals and make a food web on a piece of chart paper. आपने बच्चे कलेक्ट करनी है एनिमल्स की पिक. आप पुराने न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, आप पुरानी मैगजीन से लेके अपने चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट में पेस्ट कर सकते हैं और फूड वेब की फॉर्म में आपने पेस्टिंग करनी है. ओके पिक्चर्स की. जैसे मैंने यहाँ फूड वेब बना रखा है, इस तरीके से आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स की जो फूड वेब बनाते हैं. नाउ वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स. आपने इस चैप्टर से क्या वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स सीखी? डू नॉट ईट योर फूड इन अ हरी. जल्दी में फूड नहीं खाना चाहिए. ओके क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता फिर. डोंट जंप और रन आफ्टर हैविंग योर मील. और आपने जंप नहीं करना है, रन नहीं करना है खाना खाने के बाद. च्यू द फूड प्रॉपरली. और खाने को बहुत अच्छे से चबाना है. ओके इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे पॉइंट्स तो आपके डाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा. Now this is your homework. Try bookwork and question answers. आपने bookwork और question answers try करने हैं. थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.